सो हेलो एवरीवन, इन टुडेज वीडियो वी वांट टू टॉक अबाउट काफ़ी लोगों को डाउट है कि यार एमएस कैसे कर सकते हैं वो डायरेक्टली आफ्टर बीसीए। और बहुत लोगों को लगता है कि यार एमएस करने के बाद उनका फ्यूचर जो है वो एक्चुअली में ज़्यादा सिक्योर्ड है, वो बाहर से करते हैं और वहाँ पर उनको मैक्सिमम पैकेज लगता है। तो यार बहुत सारे लोगों को ये डाउट है कि क्या वो बीसीए के बाद, एमसीए के बाद या बीटेक के बाद एमएस कर सकते हैं, नहीं कर सकते, और क्या एग्जैक्टली एलिजिबिलिटी है। सो टुडे वी हैव रोहन विद अस। तो रोहन इसके लिए एक परफेक्ट एग्जाम्पल है और वो करंटली वहीं से एमएस करके वहीं पे जॉब कर रहे हैं। तो हेलो रोहन, एक बार अपने बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे दो, अपना बैकग्राउंड बता दो, कौन सी डिग्री की थी एंड एमएस कहाँ से की थी एंड करंटली आप क्या कर रहे हो। Okay, hi everyone. So my name is Rohan. I did my bachelor's BSc in computer science from Dayal Singh University. DU, Dayal Singh College, and then I did my MCA from IP University, USICT, and later on I joined MS in computer science in UTA, which is in Texas, and completed my master's in May, and then I joined Nokia as a full-time employee from June, and I've been working since then. Worked on multiple projects for my university, for other companies as well, and right now I'm here. Yeah. तो यार अब काफ़ी फॉर्मल हो चुका है, तो यार रोहन भाई एक बार ये भी बता दो कि एमसीए करने के बाद तो यार ज़्यादातर लोग जॉब ले लेते हैं, और जैसे कि मैंने ली और भी बहुत सारे लोगों ने ली, लेकिन एमएस क्यों, मतलब इतनी पढ़ाई किस लिए? पढ़ाई इसलिए कि प्लान पहले से था। जब बैचलर्स पूरी करी तो प्लान था उस टाइम पर भी कि आई वांट टू परस्यू माय हायर एजुकेशन अब्रॉड। तो उस चक्कर में मैंने आई स्टार्टेड लुकिंग आउट वेज, बट एज यू नो द बीएससी इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम देयर यूनिवर्सिटी वो 3 साल की होती है। तो एंड द मिनिमम रिक्वायरमेंट मोस्ट कॉलेजेस हियर आर 16 year of education, which is 12 plus 4. So for that, I was not qualified for all the universities. There are some which take you, but there are many which will not. So for that reason, I joined MCA, and I did my MCA, and great experience. Of course, MCA was a very good experience. So many professional languages, so many ways of how to do work, because MCA is a professional course. We know that it's more related to what industry is requiring and all that. But उसके बाद भी मुझे MS तो मुझे करनी थी, तो इसलिए फिर I joined MS here, and then yeah, that was the main reason, because I wanted to do it for a very long time. Plus the extra exposure you get of abroad education, थोड़ा यहाँ के सिस्टम को समझने को मिलता है, यहाँ का आइडिया होता है कि आप what is the main difference, and of course the pay change तो चाहिए होता है सबको। ठीक है, तो यार सबको पता लग गया होगा एक बारी कि किस लिए इन्होंने एमएस की और एमसीए भी किस लिए की। तो यार अगला मेरा क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा जेनरिक है और काफ़ी लोगों को ये पूछना था सबसे ही, तो तुम ही सबसे बड़ी एग्जांपल हो कि बीसीए के बाद, जैसे आपने तो बीएससी की, बीसीए के बाद डायरेक्टली कर सकते हैं एमएस, या फिर अपने एमसीए ही एक बेटर ऑप्शन है उस, क्योंकि हमें एमएस करना है फॉरेन में। तो कोई ऐसी एलिजिबिलिटी है क्या वहाँ पर कि 4 साल की डिग्री होनी चाहिए कुछ? हाँ, जैसे कि मैंने बताया कि डिग्री मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस विल रिक्वायर यू टू हैव more than like 4 years of education in your home country, but there are still some exceptions if you want to look for them. Might not be as great as Stanford, Harvard, or MIT, which some people might be focusing on, but there are still some universities where you can get admissions on 3 years basis, because reality is what we have done in MCA, what I have done in MCA, I know is very much equivalent to what I've done in MS in computer science. Just that I was able to do more assignments of real time. I was able to create things from scratch, which was not there in MCA. That is the only thing missing from MS here and the MCA in India. So otherwise, everything is quite similar. It's now 2 years, the MCA, and the MS is also 2 years. So it's pretty much same. You can technically you should be able to do it after BCA, but unfortunately we can't. ओके, तो यार अगला मेरा क्वेश्चन ये है कि एमसीए करने के लिए प्रोसीजर क्या इंडिया में, कि डायरेक्टली आपने पेपर दिया और आपका अगर अच्छी रैंक आई तो आपका एडमिशन हो गया और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वगैरह है। तो यार फॉरेन में एमएस करने का एग्जैक्टली क्या प्रोसीजर है? क्या हमें वहाँ कोई नंबर लाने होते हैं? इसके अलावा हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, और कुछ लोन वगैरह की फैसिलिटी भी है कि अगर मैं कोई पुअर बैकग्राउंड से और अभी करंटली मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा, तो ऐसा कुछ? So yeah, स्टेप बाय स्टेप जो क्वेश्चंस थे उसका आंसर करता हूँ।
तो देर आर मैनी थिंग्स विच MS के लिए देखी जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं. इट्स एक्चुअली अ कंप्लीट प्रोफाइल दे ट्राई टू सी most of the colleges, and so for that you have to build your profile accordingly. So scores भी important होते हैं, and साथ साथ में co-curricular और extra curricular activities भी important होती हैं, which you have to list it on your resume and explain. And plus उसके साथ उसको explain करने के लिए ये नहीं कि आप just resume में लिख दिया and हो गया. The universities here required LORs and SOPs. So what are LORs and SOPs is, LOR is letter of recommendation. So let's say you need 2 or 3 letter of recommendation from, for my case I did from my professor and one of the my what was that, manager where I was working for as an intern. So those LORs I took, and then SOPs is it's called statement of purpose. So you, in that you explain your purpose, and in that statement, a big letter, you actually explain that what has been your journey, how different things, different activities have been able to align you towards MS. So you have to explain that and kind of convince the reader that okay, you are into education and you really want to do this because you have a passion about it. So that is also required. Over that, the resume should be like that, and then the scores. For the scores, you require like a GRE and a TOEFL or IELTS. That's like English proficiency, and the GRE is they have 2 sections for GRE. It's I don't remember the exact full name. I think it's graduate record something. I don't remember the examination probably. So I might be wrong, but something for the GRE. So they have 2 sections, verbal and quantitative. Quantitative is quite similar to what we did as an MCA entrance. What you call the reasoning section? Reasoning, not exactly Quantitative reasoning. and I would reasoning. mathematical sections. The math sections which we did in MCA, it's very similar to that. Reasoning is not there. Computer science is not there, but verbal is there. So verbal sections are also pretty much similar to what we did in an entrance exam of MCA, but there are more sections. So there are books in the market, there are online content, there's abundance of content about this. For this, you can do GRE just by the online content also, if you really are a good self-study person. After that, all these things, then you apply to universities. Every university you require a separate application. It's not like Delhi University, you just do one application and all the universities will take you, or like IP or NIMSET we used to give, like just give one exam and every university will be considered. It's not like that here. Exam is separate, and then you put those scores to those universities, and that also requires money. Every university you send those score to, that also you have to pay money for. So everything in the step will require initial funding from yourself before you even get to a loan stage. And then once the application is done, they will send you an acceptance or a reject. Mostly if you have decided accordingly कि कौन सी यूनिवर्सिटी तुम्हारे रीच में है, तुम्हारे से प्रोफाइल से मोर अलाइन होती है, इफ़ यू मेक श्योर कि वो चीज़ है, तो यू विल गेट एक्सेप्टेंस फॉर श्योर. बट इफ़ यू गो फॉर ओवर एम्बिशियस एंड यूनिवर्सिटीज लाइक कि मेरा स्कोर not even in the top people and I am still trying to go for MIT will try to take the cream. They will go for the best score. So you have to be realistic about your applications, and after the applications you can go for loans. There are multiple loan vendors in India, and also in abroad there are few which are giving you education loan for dollars. Let's say they will straight away give you dollars and you have to return in dollars, so there is no transaction or to INR or anything. And there are many like HDFC Credila, and I think SBI also gives some amount of loan. Then you have the private financiers as well, and they are not scammers. They will not try to scam you. I myself took a loan from a private bank rather than a proper bank, but the whole process is very streamlined. It's monitored by the government of India, so it's not like you will get scammed for the interest rate. They will compound on you so much. It's not like that. It's pretty straightforward. The maths will be in front. The math of the whole loan and how you have to return it will be in front of you. Even though the APR will be fluctuating, they will give you extra years to fulfill that amount. So all that is very much regulated. ओके तो यार जिनको भी ये डाउट था कि किस तरीके से जाएंगे वो MS करने के लिए, तो यहाँ पर आई होप क्लियर हो गया होगा. ओके तो यार जैसा कि आपने बताया कि आपने अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में ट्राई मारा, तो कुछ के नाम बताओ जो कि सम ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ ऑफ US है, क्योंकि आपने US के लिए एम करा, तो काफ़ी लोग जानना चाहते होंगे कि सबसे बेस्ट कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है जिनके लिए अगर कोई करना चाहता है तो एम तो कौन सी हो. आई थिंक मैंने अपने टाइम पे व्हेन आई वाज प्लानिंग, मैंने 6 या 7 यूनिवर्सिटीज़ में एप्लीकेशंस दिए थे, आउट ऑफ विच आई थिंक आई गॉट 5 एक्सेप्टेंस और शायद 1 या 2 रिजेक्ट्स थे मेरे.
My biggest major reject was from UC Boulder. This is University of Colorado in Boulder. That was my most ambitious and the most desired one universities. And I also wanted to do for Purdue, but my Purdue application couldn't go through. So there are some these colleges which are really really good. And the ones I got selected for, there were like three, I think, were in California, one was in Texas, and one was in Chicago. So the one I joined, UTA, this was the only university I'd applied in Texas. I still regret myself. I should have applied one or two more universities in Texas. Uh, and apart from that, I got one from Chicago, which was, I think, Wright State. I don't remember the exact names. But yeah, there was some UCs, University of California, and some CUs, California States, CSUs. So California State. So you can aim for University of California's and CSUs. CSUs are pretty much easier to get in than UCs. And apart from that, there are many universities. Right now, there are many universities in US. If you go around and check on the list, I think you'll find more than 100 universities in US who are providing the same computer science or any other course which we do in engineering. So there are many universities, but it's more about what aligns with you, like the batch size, the core curriculum, and the syllabus, and the professors. Like if there is a professor who you are really aligned with the studies he's doing, so those things really matter in this case. And right now, which I am seeing the trend recently is more than universities, you should look for return of investment. Like how much money and the tuition fees is going to be on you have to pay, and how much is the job ratio in that university. Because if you don't get a job, there is no point of getting a degree. Yeah, because you have spent so much, at least you should be getting something back. So ROI, I think, is the biggest factor right now, which I feel. So even if you're going for a university which is cheaper, which is like giving you an education for 23-25 lakhs, I would say go for it. Because if that university is making sure that at 25 you will be able to get even the minimum wage, or let's say the average wage, which is like 56 or 60,000 here, you will be able to repay that loan or whatever you have taken from India or the investment you have done. So your ROI is still more than a person who has taken a 1 crore loan and is doing a similar job like you. So your ROI is better than his. So that is the biggest factor I think right now. सो मेरा अगला क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा भाई, कि ये बताओ कि टैक्स डिफरेंस का क्या है वहाँ पर, क्योंकि मैंने यहाँ सुना है कि मतलब इंडिया में तो मुझे पता है टैक्स कितना है, अराउंड 20-30% तक आपका टैक्स कटेगा, एंड देन जो भी GST वगैरह हम जो भी आइटम्स लेते हो वो लग रहा है। वहाँ पर मैंने ये सुना है कि अराउंड 40% टैक्स कटता है, तो मतलब सैलरी बचती क्या होगी? तो इसके ऊपर थोड़ा बहुत बताओ, कि ये भी सबको पता होना चाहिए। I mean, technically you're not wrong, but not exactly 40% कटता है. It varies from state to state. Because इंडिया की तरह सिस्टम नहीं है यहाँ पे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट स्लैब्स फिक्स कर दिए एंड वही कटेगा सबका, कि 7 lakhs पे इतना, 10 lakhs पे इतना। नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है टैक्स, उनका फिक्स है समवेयर, उनका फिक्स है एज इन एवरी $10,000 पे उनका वो चेंज होता है स्लैब या परसेंटेज ऑफ व्हाट दे आर टेकिंग इन। बट अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव टू पे स्टेट टैक्स। स्टेट ऑल्सो रिक्वायर्स यू टू पे स्टेट टैक्स। सो फॉर दैट वो जब ऐड होता है तो कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पे हमारा ओवरऑल टैक्स get close to 30, 32, 33% also. But there are some states, like let's say where I am right now. So this one has 5% plus federal का 15-16% कुछ होगा, तो I think I'm paying somewhere around 20-21. I'm not sure exact percentage, but yeah, इतने के अराउंड होगा। मेरा 30% नहीं है, तो मेरा 20% है। तो every state differs. And the state where I was before in Texas, वहाँ पे स्टेट टैक्स नहीं है। There are 5 states जहाँ पे टैक्सेस नहीं भी है यहाँ पे स्टेट टैक्स। तो अगर मैं सेम अमाउंट वहाँ पे कमा रहा होता तो मेरा फेडरल उतना ही कटता, बट स्टेट जीरो हो जाता। तो आई वुड हैव सेव्ड दैट 5% इन माई सैलरी। सो उस तरीके से वो कटता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सेल्स टैक्स और वो सब तो सबका नॉर्मल है, वो भी डिफर करता है यहाँ पर। वो भी सेल्स टैक्स वगैरह भी डिफर करता है स्टेट टू स्टेट। हर स्टेट का अपना सेल्स टैक्स है, हर स्टेट का। कुछ स्टेट ऐसी जहाँ पे सेल्स टैक्स नहीं भी है। सो यहाँ पर एवरी स्टेट एक्ट्स लाइक अ कंट्री। तो जब हम यूरोप में जाते हैं ना, ऐसे हम यूरोप में जाते हैं और बोलते हैं कि जर्मनी अलग है, एंड वी से व्हिच इज फ्रांस इज डिफरेंट, और व्हाटएवर दैट इज, स्विट्जरलैंड इज डिफरेंट। सो ऑल दीज कंट्रीज आर डिफरेंट। यहाँ पर ऐसे भी स्टेट का भी ऐसे ही हाल है। यहाँ पे हर स्टेट डिफरेंट एक्ट करती है। वहाँ पर हम यूरोपियन यूनियन बोलते हैं, यहाँ पर हम उसको USA बोलते हैं एक तरीके से।
अगर सिंप्लीफाई किया जाए उस चीज़ को तो यार जो भी जा रहे हैं वो रिसर्च करके जाना है टैक्स के ऊपर, ठीक है। तो इससे आपको पता लग गया कि मेरे को ऐसा लगता था कि हर जगह 40% कटता है, ठीक है। तो यार ये सब नोट कर लेना। मेरा अगला क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पर आपने डेवलपर की लाइफ भी जी रखी है, इंटर्नशिप तो की है और कुछ टाइम आपने काम भी कर रखा है और वहाँ पर अब आप फुल टाइम वर्क कर रहे हो। तो डिफरेंस क्या एग्जैक्टली मतलब यहाँ पर और वहाँ पर क्या डिफरेंस है ऐसा कि लोग वहाँ जाना ज़्यादातर प्रेफर कर रहे हैं, ज़्यादातर जो बंदे आजकल जा रहे हैं? Yeah, so like right now, when I came here, my plan was to work as a full stack because मेरा back end, front end और back end और डेटाबेस वगैरह में काफ़ी पसंद था मुझे कि मैं आई शुड वर्क फुल स्टैक, आई शुड हैव द बिगर पिक्चर, कैसे हो रहा है काम, क्या हो रहा है। इंडिया में मैंने बैक एंड पे, फ्रंट एंड पे काम किया था एंड सम प्रोजेक्ट्स में मैंने फुल स्टैक भी किया था, तो मुझे आइडिया था वो कैसा है, बट आई वॉज नेवर इन टू द इंडस्ट्री। आई वॉज नेवर इन टू द इंडस्ट्री बट आई हैव ऑलवेज गॉट द आइडिया ऑफ हाउ द इंडस्ट्री इज़ बिकॉज मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने ज्वाइन भी किया, उन्होंने बताया मुझे कि क्या होता है, कैसे होता है। सो राइट नाउ वेयर आई एम वर्किंग, I am kind of which field I'm working. I'm a solution engineer, but जो मैं काम कर रहा हूँ, it has everything. I'm doing automations also. I'm doing my deployment work as well. I'm doing testing. I'm doing administrator work. So there are multiple things which I'm doing at the same time. But there is a peace of mind. But there is a peace of mind which I feel. Let's say if I start my work, I usually start my work way early than or maybe I do it before I start my day. You can say like that. So मैं 7 या 8 बजे अगर मेरा कुछ है important है बहुत कुछ, तो I will do it early in the morning and then फिर मैं बाकी end of the day तक मैं wait नहीं करता कि मेरे को कुछ काम अपना end of the day तक लेना है। and even if my work is done, my manager is okay. तो मुझे वो चीज़ होती है कि I don't have to sit constantly till 5-6 to show him कि मैंने काम किया है। Moreover, मोस्टली मैनेजर्स विल यहाँ पर बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं कि यू कांट वर्क, यू शुड नॉट वर्क मोर देन योर स्पेसिफाइड आवर्स, लाइक से 5 PM है तो 5 PM क्लोज। और ऐसा मैंने सिर्फ एक जने से नहीं, मैंने बहुत जनों से सुना है। अगर कोई बाई चांस कोई वर्क को 6 या 7 बजे तक कर रहा है तो उसको सामने से मैनेजर बोलता है यहाँ पे कि डूड यू हैव सम लाइफ, जस्ट एंजॉय योर लाइफ, बिकॉज वो वर्क लाइफ बैलेंस है यहाँ पे। तो उस तरीके से सब लोग कंसिडरेट भी हैं। 1-2 केसेस होंगे जो नहीं भी होंगे। आई मीन अमेजोन का केस तो हर जगह सेम है, तो मैं वो नहीं पॉइंट आउट करूँगा, बट हाँ मोस्ट ऑफ द केसेस यू सी यहाँ पे मैनेजर्स कंसिडरेट है एंड दे विल वांट यू टू हैव योर लाइफ विद द वर्क, एंड विच आई फेल्ट मे बी इंडिया में थोड़ा सा वो अभी लैग करता है, मे बी अब आ रहा हो, आई डोंट नो। ओके, नहीं अभी तो नहीं आ रहा, ठीक है। इन्होंने बिल्कुल सही बोला, काफ़ी डिफरेंस है इसमें। तो अगर ऐसा है कि वर्क लाइफ बैलेंस और टाइमिंग्स की बात हो, ठीक है, एवरी कंपनी इज़ नॉट माइक्रोसॉफ्ट। ओके, तो यार मैंने एक और चीज़ नोटिस की ऑन लिंक्डइन जो सारे लोग जानना चाहते हैं कि बेसिकली गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, टेस्ला, इन सारी कंपनीज़ में हमें वहाँ से जॉब अगर हम MS कर लेते हैं, इंटर्नशिप लेके जॉब लेने बहुत आसान है। यहाँ पर तो एक तरीके से लोग IITs को भी रिजेक्ट कर देते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो इसके ऊपर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, अभी आप भागे हो तो? सो देयर आर 2 थिंग्स यू मेंशन। एक तो जो ये हमारी फैंग जिसको हम बोलते हैं, फैंग, अब टेस्ला भी आ गया है उसके अंदर, तो फैंग, सॉरी नॉट फैंग, मैंग, now it's Meta. So yeah, Mang, plus you mentioned LinkedIn, so I will touch bases on both the points. So ऐसा नहीं है कि difficult नहीं है यहाँ पर भी, it's as equal as it was in India, but I feel like what difference it here and there is the people who are applying, the number of people you have, the number of applications you have. So let's say if you and me are applying in India, ठीक है ना, हमारे साथ हमारे बैच के 100 लोग और कर रहे होंगे, 200 लोग अप्लाई कर रहे होंगे एक साथ उस सेम एप्लीकेशंस पे। तो इफ़ योर एंड माइन रेज्यूमे आर सेम, तो हमारे जैसे हज़ारों का और भी सेम है, तो वो स्टैंड आउट कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। एंड यूनिवर्सिटी बेस अपार्ट फ्रॉम IIT हमारे पास इतना कोई मेजर यूनिवर्सिटी बेसिस नहीं है इंडिया के अंदर, बिकॉज ऑफ विच अब पॉपुलेशन का फ़र्क हो गया एंड प्लस दी यूनिवर्सिटीज बेसिस है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, यूनिवर्सिटीज़ की एक रेपुटेशन बनी हुई है, दे हैव देयर बेसिस। लेट्स से आई वाज फ्रॉम UT टेक्सास, तो यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास का अपना एक, या इट्स लाइक इट्स अ फुल ग्रुप ऑफ UT। तो जितने भी लोग, अगर लेट्स से कोई माइक्रोसॉफ्ट में 10 लोग गए, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से हैं वो, अब वो भले ही ऑस्टिन से हो, डैलस से हो या आर्लिंगटन से हो, दे विल स्टिल कंसिडर ऑल एज UT एलुमनाइज, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एलुमनाइज। तो वो एक कनेक्शन इजीली बिल्ड हो जाता है, बात करने के लिए भी रहता है, एंड दे हैव दिस कल्चर ऑफ एलुमनाइज, एलुमनाई बॉन्ड बहुत, एलुमनाई कल्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, बिकॉज ऑफ विच इट्स ईजियर टू गेट कनेक्टेड विद पीपल हु आर ऑलरेडी वर्किंग इन बिगर पोजिशन। दैट इज वाई पीपल कहते हैं कि यहाँ पर थोड़ा ईजी है। ईजी नहीं है,
जो हार्ड वर्क करेगा उसको मिलेगा, वो वहाँ पर भी है, इंडिया में भी है और यहाँ पर भी है, सेम चीज़ है वो चीज़ उस तरीके से, बट द कनेक्शन, the number of people applying, that is different, and plus the requirement is still similar. रिक्वायरमेंट दोनों जगह ऑलमोस्ट सिमिलर है, शायद इंडिया में थोड़ी ज़्यादा ही होगी बल्कि मुझे लगता है, क्योंकि हम ऑफशोर वर्क्स बहुत करते हैं हमारे, अगर कुछ हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं विच इज़ अ वेरी लो लेवल डॉक्यूमेंट्स और हाई लेवल डॉक्यूमेंट्स जिसमें बहुत ज़्यादा एक्सेल शीट्स भरनी होंगी, तो मोस्टली वो काम फिर इंडिया जाता है, वो यूएस में नहीं करवाएंगे वो। तो इंडिया से ज़्यादा जॉब्स गूगल मैंग वट एवर यू से वो वहाँ पर होगी इंडिया में कंपेयर टू हेयर, बट स्टिल यहाँ पर इसलिए मिल जाती है बिकॉज कनेक्शन, एंड बी पार्ट इज पॉपुलेशन इज अप्लाइंग। बाकी स्किल सेट सेम है, स्किल सेट में कोई डिफरेंस नहीं है। एंड कमिंग टू द लिंक्डइन पॉइंट ऑफ व्यू, I want to tell this to your audience specifically, and thank you, you bring this up. LinkedIn is very important. People don't understand the point of LinkedIn in India. When I was also there, मेरे को भी नहीं पता था ये चीज़, but LinkedIn profile proper sharp and explaining you very clearly कि तुम क्या हो, तुम्हारे रेज्यूमे से भी बेटर तुम्हारी लिंक्डइन प्रोफाइल होनी चाहिए, आई फील लाइक, बिकॉज रेज्यूमे इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, उसके बाद वो लोग लिंक्डइन जाके चेक करेंगे अगर किसी को हायर करना होगा तो लिंक्डइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड if you can, if you have done it, I don't know, but if you can do it, a LinkedIn profile makeover of yours, because your profile is really good, I've seen a LinkedIn, and you can check mine also. I can give points how I changed it according to the industry, but it is very required because LinkedIn is like your biggest social media for getting a job. या राइट, यू आर राइट। तो यार रोहन की प्रोफाइल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिसने नहीं चेक करी वो चेक कर लेना ज़रूर जाके और कनेक्ट हो लेना, और वहाँ पर उनकी प्रोफाइल से आइडिया ले सकते हो कि किस तरीके से अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल शार्प बना सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि प्लेसमेंट प्रोसेस क्या है यूएसए में एग्जैक्टली, क्योंकि यार हम क्या देखते हैं इंडिया में कि एक डीएसए राउंड हुआ, एप्टी राउंड हुआ, उसके बाद 2 टेक्निकल राउंड हुए जिसमें डीएसए और प्रोजेक्ट्स पूछे जाते हैं, एंड देन मैनेजरियल राउंड पूछा जा रहा है। अब जब ले ऑफ्स हो रहे हैं तो यार एक आधा और राउंड बढ़ाया जा रहा है जो बार रेजर है, तो वहाँ पर क्या सीन है, वहाँ पर कितने राउंड्स होते हैं और कितनी जल्दी हायर हो जाता है एक पर्सन? सो टेक्निकली जैसे कि हमारे इंडिया में था, इंडिया में प्लेसमेंट को लेके स्टिल आई विल से कुछ यूनिवर्सिटीज़, हायर एंड यूनिवर्सिटीज़ का सिस्टम बहुत अच्छा है। दे हैव प्लेसमेंट सेल्स, दे हैव students working for placement cells, of course, and then companies coming into the universities to take your interviews and line up interviews. मास रिक्रूटमेंट भी होती है अच्छी खासी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, वो सब चीज़ें इंडिया के अंदर बहुत अच्छी हैं, which is not here. Here you mostly will see job fairs, career fairs. In that you will connect with the hiring manager or the, I think mostly hiring manager or HR managers you will see there. And उसके बाद फिर तुम connect करते हो, and then they will send you to their portal. You will apply there, and then after once they shortlist you, then only you will get the rounds. And coming back to the rounds, I feel like DSA specific they will not ask now, because अब इंडस्ट्री थोड़ा इवॉल्व हो गई है। दे वॉन्ट स्पेशलिस्ट, दे वॉन्ट पर्सन हु इज स्पेशलाइज इन हिज डोमेन। सो लेट्स से इफ यू आर गुड इन पाइथन, तो on the job is for Python, they will only ask you Python. They will not go in DSA and go ask you all the basic question of explain the 4 pillars or explain me the OOPS concept. They are tell me the any algorithm which works in O2 n square or whatever that is. So they will not go in that DSA specific, because they all know this is all bookish. Everybody knows these answers, and they've been asked repeatedly. So now what they're doing is mostly what I have seen here is you will have first a coding round. So they will have 1 or 2 coding round depending on the job title. Higher position mostly have 2, lower positions may have 1. So you'll have that. In the second round mostly will be like a technical kind of round where he might ask you what he did in the coding, or ask you product specific. Let's say they are working on something related to like say this was working on ticketing, so they will mostly ask like, have you seen the software, have you seen the working of the software? Or if you're going for a cloud job, they will ask you AWS, GCP, and all those Azure. So do you know how these are working and what is the difference, and something like that. So they will be very specific to what they want in the candidate in the technical round. And then after that you will see a managerial round. Somewhat there are sometimes a managerial round, sometimes not. So the managerial round will mostly consider managerial questions like how do you react to the team and all that, and how responsible you are. Those are questions will be there, and also the manager will look at the
person's ideology of working specifically, because he wants to see like if this person is coming in, is bringing something on the table. Because technical people you can find many, because there are many people who are maybe technical, more technically sound than you, but why he's hiring you? Because of also something of a leadership quality or something like that which you're bringing on the table. So that's a very important round for some companies. I've heard like Microsoft, and I think maybe Google, they have these round very specifically because they don't just want a coder, they want a personality to be joining in. So that is also required. And after that, you'll see the HR round. HR round is mostly just a formality round sometimes. So these are the main rounds which they cover. हो गया। तो यार जहाँ तक सारे देख रहे होंगे काफ़ी हद तक सिमिलर है, लेकिन डिफरेंस मुझे अभी भी यही लगता है कि पॉपुलेशन डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से वहाँ पर थोड़ा जल्दी हो पा रहा है। और राउंड्स आप देख रहे हो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है और डिफ़िकल्टी भी सेम ही लग रही है। सो ओके ओके सो एक बारी अपना जो भी आपकी वर्किंग लाइफ है एट नोकिया, एंड आप क्या चीज़ पे काम कर रहे हो, कौन से टेक स्टैक पे काम कर रहे हो, एंड करंटली आपका वर्क फ्रॉम होम है या वर्क फ्रॉम ऑफिस है, एंड वहाँ की लाइफ मतलब वर्किंग लाइफ किस तरीके से डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। सो करेंटली मैं एक हाइब्रिड मॉड्यूल में काम कर रहा हूँ, तो मेरा मॉडल जो है हाइब्रिड है। सो आई हैव टू गो मोस्टली ऑन मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडेज, एंड ट्यूसडे थर्सडेज मेरा वर्क फ्रॉम होम होता है। सो अभी ये मॉडल है। एंड राइट नाउ फॉर नोकिया आई एम वर्किंग फॉर project with Verizon. So what Nokia is doing, we are now not just that old Nokia 3320 or whatever the model that was. So we are not that, we are still selling phones, but not as our primary resource. We are now a B2B giant, we can say that, because our main client now becomes companies like Verizon, AT&T, Jio in India, Airtel. We target these as our clients because we create the environment, or we say the place where the calls will be made for 3G, 4G, 5G, and now 6G. And these are the operators who operates on this module. We sell them this whole model, and then they take over that, and we maintain it afterwards and keep on doing the changes for them, whatever they require in future, whenever. It's a very long business and long thing. So it's more on networks now rather than being selling on phones. And we are constantly doing patent sellings. We are like right now there is some chips in iPhone which are completely patent on Nokia, so they are taking it from us. So if you have heard the news, we recently had one more deal with Apple and with the government of US. So we are working on many different projects and innovations, but right now the main focus is mobile network and the network in specific. तो यार यहाँ पर आपको पता लग गया होगा कि वर्किंग डिफरेंस कितना है। तो एक बार यार ये भी बता दो, काफ़ी सारे लोग ये जानना चाहेंगे कि सैलरी डिफरेंस क्या है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग वहाँ पर इसलिए जाते हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत ईजिली हम काफ़ी हाई पैकेज ले लेते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि खर्चा भी उससे ज़्यादा ही हो जाता है। तो यहाँ पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर कोई जाता है वहाँ पर तो एवरेज मैक्सिमम कितनी सैलरी वो वहाँ पर जाके ले सकता है? So like if you say salary difference, yeah, of course salary difference तो है ही, because when you earn in dollars वो difference आता है। My calculation was when I was there, मेरा 75 पे कैलकुलेशन था, अभी 85 के आसपास पहुंचने वाला, थोड़े 83 आई थिंक चल रहा है। तो कैलकुलेशन तो वो उसी हिसाब से चलता है। एंड आई थिंक द मिनिमम द बेस पे और द एवरेज पे ऑफ होल यूएस इज $56,000 or $60,000, बट फॉर tech or IT is different. Here I think the minimum will start around somewhere 70-75, and it can go up to 120-130, and there are rare cases. I know one of my friends, she started at 160 also. So there's a very big difference in pace, but that depends on the place to place. Let's say a 70 in some states will be equivalent to 120 in some states, because as we discussed, and the standard of living difference, because every place has different रेंट, ग्रोसरी प्राइस, वही सेम जैसे दिल्ली और मुंबई में होता है। अगर मैं सिंपल तरीके से समझाना चाहूँ कि अगर मैं बोलूँ 1 लाख रुपए तुमको बैंगलोर के अंदर मिल रहा है मंथली, और वही 1 लाख रुपए तुमको यूपी के किसी नॉर्मल से शहर में मिलेगा, वो डिफरेंस रहेगा जहाँ पर तुम रेंट का पैसा वहाँ पर 10,000 भर रहे हो और वहीं बैंगलोर तुम 30,000 भर रहे हो। सो दैट डिफरेंस ऑफ सेविंग रहेगी हमेशा। तो वो डिफरेंस है, तो इसलिए वो 1 लाख इन
यूपी के किसी शहर में इज इक्वलेंट टू 2-3 लाख रुपए इन बैंगलोर। या सो वही वही वाला डिफरेंस है कि शायद जो बंदा जिसको मैंने बताया जो 160 कमा रहा है विच इज इक्वलेंट टू मे बी मेरी स्टेट्स के 1 लाख या 1,10,000 के आसपास भी होगा। ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पर वो टैक्स भी ज़्यादा है, लिविंग का भी ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। सो देर इज दैट डिफरेंस। एंड IT में मोस्टली packages you will get easily around, right now the market is low, so you'll get around 80-85 is very normal right now. 80-85 you can get very easily, but the time which was really good, like during COVID time, the salaries were starting at 1 lakh and going up to 170 and 180 also. So you can get that kind of range easily, and state to state बहुत vary करता है। तो ऑनलाइन बहुत सारे टूल्स भी हैं टू कैलकुलेट योर सैलरी कि वो कितना डिफरेंस क्रिएट करती है किस स्टेट से। एक स्टेट में अगर तुम्हें इतनी मिल रही है तो दूसरे स्टेट में इतनी मिलती है, तो हाउ टू कैलकुलेट कि कितना डिफरेंस आ रहा है। सो दोज थिंग्स आर देयर, एंड प्लस विद डिफरेंस विद इंडिया आई फील लाइक कि उतना बड़ा नहीं है जितना हम सोचते हैं। विद लाइक मैं बोलता हूँ कि someone is earning 24 lakhs and same time let's say I am earning 1 crore, तो डिफरेंस वो 25 लाख से 1 करोड़ का नहीं है। डिफरेंस विल बी समवेयर अराउंड 25 लाख से 40 लाख का, 15 लाख का रियल लाइफ में 15 लाख वाला डिफरेंस ही है, एंड दैट इज द डिफरेंस यू विल बी सेविंग, क्योंकि खर्चों के बाद वो 10-15 लाख का डिफरेंस रह जाएगा फिर वो when you see the difference of amount of spending on groceries and everything। टमाटर भी इक्वल अभी भी इक्वल रेट पे है, वो 150 के जब हुए थे हमारे यहाँ अभी भी 150 के ही है, तो वो सेम ही पड़ता है हमको हर टाइम पे। ठीक है, तो यार यहाँ पर जिसको भी डाउट था कि कितने पैसे कमा रहे हैं वहाँ के लोग, तो वो आई होप यार अब क्लियर हो गया होगा। ओके, सो माई लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस अमेजिंग पॉडकास्ट इज दैट कि यार कल्चरल डिफरेंस, वहाँ पे रहने का डिफरेंस अभी तक मतलब इंडिया से वहाँ तक कितना शिफ्ट हुआ है, एंड एग्जैक्टली इज US वेलकमिंग टू इंडिया, एंड इंडियन स्टूडेंट्स अगर कोई जाता है तो मतलब उसे डरना तो नहीं चाहिए, मतलब ओवरऑल क्या क्या एक्सपीरियंस था थोड़ा बहुत ब्रीफली बता दो। या सो एक्सपीरियंस नहीं, हम यहाँ पे जर्नी बोलते हैं, तो जर्नी हैज़ बिन रियली गुड टिल नाउ। द ओनली पार्ट आई स्टिल फील कि जो मिसिंग रहता है वो हमेशा वो रहेगा, बिकॉज मैं दिल्ली से हूँ, आई वेरी मच एंड आई एम अ फूडी, तो फूड एक बहुत बड़ा फैक्टर हमेशा रहेगा मेरे लिए कि बट छोड़ दिया तो कुछ कहना नहीं, बट स्टिल फूड इज वन थिंग यू ऑलवेज मिस। अपार्ट फ्रॉम दैट आई फील लाइक apart from that everything is really good, people are really good, they are, will be some cases they मतलब एक आध तो कोई निकल ही जाता है ना इतनी भीड़ में जो कि थोड़ा सा अलग सोचता होगा, तो एक दो केसेस हो सकते हैं हो, बट majority people 90+% of people are really good। I mean we see India Pakistan fight over everything, एंड हेयर इफ़ यू सी मेरे बहुत सारे दोस्त पाकिस्तानी हैं, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो बांग्लादेश पाकिस्तान से हैं, मेरे सीनियर एम्प्लॉयर्स हैं जो पाकिस्तान से हैं, और बहुत अच्छी बॉन्डिंग है उनके साथ। तो ओवरऑल पीपल आर रियली वेलकमिंग हेयर, एंड सब लोग हेल्पफुल हैं, दे आर वेरी अंडरस्टैंडिंग कि ओके अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा तो दे विल कम आउट एंड हेल्प। सो वो हेल्पफुल नेचर है। रेसिज्म मैंने अभी तक इतना कुछ मेजर फेस नहीं किया, तो दैट ऑल्सो आई हैव नॉट सीन दैट मच हेयर, बट केसेस हुए हैं, ऐसा नहीं बोलूँगा कि यार ये बिल्कुल भी नहीं है, 0% है, नहीं, देर आर सम 1 or 2 केसेस हेयर एंड देयर, और निकल जाते हैं एक आध, बट ओवरऑल द लाइफ स्टाइल एंड द ड्रीम्स आई वॉन्टेड टू अचीव, I feel like every person, this is for every person, this is for you, this is for the viewers seeing right now, कि the dreams which you think are a little bit easier to achieve here, because तुम देखोगे हम लोग टेक से आते हैं, तो हमें क्या चाहिए होता है, हमें CPU चाहिए होता है, हमें एक मैकबुक चाहिए होता है, हमें एक फ़ोन चाहिए होता है, ठीक है ना। इन सब के प्राइस इंडिया में और US में सेम मिलते हैं, बट तुम अर्न ज़्यादा कर रहे हो यहाँ पे, तो वो डिफरेंस जो है आपको चीज़ें अचीव करने के लिए और लेने के लिए और मिलने के लिए बहुत बहुत जल्दी अचीवेबल बना देता है हर चीज़ को। लाइक राइट नाउ आई कैन से इन 2 years आई हैव अ कार, आई डोंट थिंक सो मैं इंडिया में कमाता तो मैं एक कार ले पाता 2 साल के अंदर, ठीक है ना। इन 2 years आई थिंक आई हैव मोस्ट ऑफ द थिंग्स विच आई वॉन्टेड बाई दिस एज, मोस्ट ऑफ द थिंग्स, सो दैट इज इट्स मोर अचीवेबल, एंड या इट्स प्रीटी गुड। It has been fun. It has been a traumatizing journey though. You will have your moments where you go down, where you will feel low, you will feel alone. But eventually, once you
get to that point where you have your circle, your friends, new people around you whom you know that you can trust even at your worst point. So from उस point से आपका सब कुछ easy हो जाता है. मेरे पास अभी इतने दोस्त हैं कि मुझे सोचना नहीं पड़ता कि मेरी फैमिली नहीं है यहाँ पे, मेरा कोई नहीं है यहाँ पे. I have that good of friends. हो गया. तो यार काफ़ी इन्होंने बेसिकली अपने दिल की बात बोल दी एंड एग्जैक्टली काफ़ी ओपनली इन्होंने अपनी जर्नी को शेयर करा जिससे कि यार सबकी हेल्प हो सके. तो अगर आपको ये सही में वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जो कि MS करना चाहते हैं. और अगर आपको कोई भी डाउट है रिलेटेड टू MS या फिर कोई फर्दर डिग्री इन US तो आप कनेक्ट कर सकते हो रोहन से एंड मेरी लिंक्डइन ID भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. तो यार आज की वीडियो के लिए इतना ही एंड आगे आने वाली वीडियो और भी बहुत ज़्यादा इंसाइटफुल होने वाली है एंड डू कनेक्ट विद रोहन क्योंकि बहुत मस्त बंदा है. ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच.